everyone. My name is Dilva Kumari. I am student of MA Applied Economics, Institute of Finance and Banking. My topic was sustainable development. Sustainable development means which fulfill the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. इसका मतलब ये यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड को ऐसे लिमिट करना या मैनेज किया जाना कि वो हैम्पर ना करे हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड को. इसमें एक कोड भी दिया गया है, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बट वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस. इसका मतलब ये है कि हमें हमारी जो अर्थ है जहाँ हम रह रहे हैं ये हमने अपने एंसेस्टर से नहीं मिली है, ये हमने अपने फ्यूचर जनरेशन से बोरो की हुई है. तो जैसे हमने उनसे बोरो की है हमें उसी हालत में उनको वापस भी करनी है ताकि वो भी हमारी तरह अपनी लाइफ यहाँ पे बिता सके. These are the objectives of sustainable development. हम इनको pillars of sustainable development भी कह सकते हैं. फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड एनवायरमेंटल ग्रोथ एंड थर्ड सोशल इंक्लूजन. जहां पर ये तीनों पॉइंट्स मीट करते हैं वो चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है. पैरामीटर्स, इसके पैरामीटर्स हैं केयरिंग कैपेसिटी, इक्विटी अमंग इंटर एंड इंटरजनरेशन, जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी. फर्स्ट, इक्विटी. Among generations, it means resources to be used in such a way that present generation does not overexploit and exhaust it completely. Here it means equal rights, opportunities and access to resources between two generations. Second, inter and intergeneration. This means fair distribution of resources. यहाँ पे क्या गया है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का प्रेजेंट ह्यूमन पॉपुलेशन में और जो बोथ प्रेजेंट ह्यूमन पॉपुलेशन और डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली. नेक्स्ट है जेंडर डिस्पैरिटी. इट एम्स टू रिड्यूस जेंडर गैप्स पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली टू प्रमोट देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज. Next, diversity. Local communities are custodian of local values in use of local resources because it knows best value that resources. क्योंकि उन्हें पता है कि इन स्पीशीज को कैसे कंजर्व करना है फ्यूचर के लिए. ये इवन एजेंडा 21 में भी कहा गया है नेटिव शुड बी treated as custodians of their. There are 17 goals in sustainable development. First one is no poverty, second zero hunger, third good health and well-being, fourth quality education, fifth gender equality, sixth clean water and sanitation, seventh affordable and clean energy, eighth है decent work and economic growth, ninth industry innovation and infrastructure, 10th reduce inequalities, 11th है sustainable cities and communities, 12th responsible consumption and production, climate action, 14th है life below water, 15th life on land, 16th peace, justice and strong institutions, 17th है partnership for the goals. First, no poverty. Calls for the end of poverty in all forms. ये इसकी ट्रू लाइन है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जहाँ पे लिखे गए हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट था. One of the 17 sustainable development goals established by the United Nations in 2015 calls for no poverty. The official wording is to end poverty in all its forms, everywhere. The goal has 7 targets and 13 indicators to measure progress. The 5 outcome targets are eradication of extreme poverty, reduction of all poverty by half, implementation of social protection systems, ensuring equal rights to ownership, basic services, technology and economic resources, and the building of resilience to environmental, economic and social disasters. The 2 targets related to means of achieving Sustainable Development Goal 1 are mobilization of resources to end poverty and the establishment of poverty reduction policy from work at all levels. On the key indicators that measure poverty is the proportion of population living below the international and national poverty line, measuring the proportion of the population covered by social protection system and living in households with access to basic services is also an indication of the level of poverty.
A study published in September 2020 found that poverty increased by 7% in just a few months, even though it had been steadily decreasing for the last 20 years.